being a civil engineer, I am running a mechanical engineering company. Those 34 years journey, when you started this company, what were the key things you had in mind for that? Previous company का turnover 10 crore था. जब ये change over आया, तो it dropped down to 1 crore. Now we are aiming for 100 crore. सारा आशीर्वाद आटा 90% I would say is screened to our equipment. We have developed some special equipments even for the ISRO. Do you think particularly in India, do we have any kind of advantage when it comes to manufacturing sector? इंडिया की प्रोडक्ट की ओवरसीज में वैल्यू है. जो सॉल्यूशन आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा वो इंडिया का इंजीनियर ला के दे सकता है. What are the key strategies which have helped you market your company over the last 3 decades? In current era, if you consider, if you are not digitally present, you are not existent. जो फैमिली ओन कंपनीज होती है वहाँ पर आप डेलीगेट करना नहीं चाहते हो. सारी पावर आपके पास रखना चाहते हो. अनलेस यू हैव प्रॉपर एसक्यू यू कैन नॉट बिकम अ लीडर और एंटरप्रेन्योर. अगर आपको ग्रो करना है तो यू शुड हैव अ सिस्टम, यू शुड हैव अ टीम. वो टीम आप ऐसी हायर करो कि उनके पास वो नॉलेज है एंड देन गिव देम द फ्रीडम. You are donning multiple hats, so how are you able to maintain that momentum of creating content? जो मैंने गोल सेट किया तो आई एम वर्किंग फॉर दैट गोल. दैट ड्राइव्स मी कि नहीं करना ही है. What are the insights you have heard about India in general or Make in India products from your global audiences? I'm very keen to hear that as well. We are getting very positive feedbacks about our products supplied to them. काफी सारी इंडियन मशीन्स अभी दिखती है. You can understand कि now acceptability of Indian product वो बढ़ गया है definitely. Hi everyone. So today's episode with Nilesh ji is going to open up a lot of perspectives for you as an entrepreneur. How did he build a mechanical engineering company that is today clocking 80 CR revenue and soon entering the 100 CR club? How did he leverage the power of digital marketing to tap onto the global customers? What do global customers think about Make in India products? How to turn the customer insights into innovative product ideas? And last but not the least, what are the key drivers of momentum to grow a business exponentially in any domain, be it services, trading, or manufacturing? Hello and welcome to the first episode of Meet Momentum Masters. So today we have the pleasure of hosting our first Momentum Master, somebody who has an entrepreneurial experience of over 3 decades, and he is also a passionate content creator. He embodies the true spirit of entrepreneurship with his relentless pursuit of learning, of innovation and inspiring people. He has served as a governing council member of Quality Circle Forum of India Vadodara chapter for over 2 years, and currently he is the COO of Galaxy Civtech, a leader in industrial sieving and filtering applications. Welcome to the show, Nilesh. Thanks, Sudha. Thanks for calling me here. My pleasure to be here, the first Momentum Master. So, Nilesh, walk us through your journey of entrepreneurship. It's a long journey, 34 years. Started my career as a purchase engineer, though I am a civil engineer. I joined an engineering company, mechanical engineering company. Started my journey from there. Worked through different departments like production, the manufacturing, the quality, design, marketing. And over a period of 15, 20 years after that, I got an opportunity to lead the company. And since then, I am leading the organizations. So this is my journey of 34 years of entrepreneur. So, what are the key drivers, what led to the momentum of growth for Galaxy Civtech? There are several key factors, I would say. First and foremost was the quality of the product, which wanted to be, international standard. Otherwise, you cannot succeed. So that was first. Then you have to be near the customer. So customer focus and next to customer. Current era, if you consider, you cannot be physically present with the customer every time. So the digital marketing helped us to reach to the customer every now and then. Product innovation, definitely we have developed almost 17 different products in last 17 years. Great. So that has helped us to be the market leader in sieving and filtration equipment worldwide, I would say. And customer focus, as I mentioned, but at the same time, customer service is also a crucial thing. Making customer aware and supporting the machine keep on running. So that was I would say, the key factors or key elements which has made us the successful in the journey. Great.
So before Galaxy Civtech, like when you were planning to start Galaxy Civtech, you would have of course done a market survey and then tried to identify what is your target audience, your target customer base, as well as what would be the key differentiation. So take us behind those 34 years journey when you started to start this company. What were the key things you had in mind for that? The sieving equipment business, we had surveyed and got the market feedback that no, the worldwide at that time, I am talking around 16, 17 years ago, at that time worldwide it was more than 3,000 crore business, and we were nothing. I mean, in India was having a very small market share of that. So that made us to start this business of sieving and filtration equipments. Then we surveyed that what are the equipments required in the market. In India, there was only one kind of equipment being used. But in worldwide, if you see, there are different kind of equipments being required for different applications. So then we started working on the product developments over a period. And that has helped us again to reach to the customer with a specific need solution rather than a generalized equipment given. Okay. So that basically that gave us the idea that all the processing industry needs some sort of sieving or filtration, whether it's a raw material, whether it's a between the process, or whether it's the final product. So wide applications of the product was there, the market was wide, as I mentioned, and that helped us to decide that okay, let us go and develop this industry as the prime industry for us and grow in the world market. Okay. So like you said, every processing industry who are into development of any sort of liquid or, food product, pharma, these are the different industries. Or I think the applications are very wide for your products. So you kind of designed a product basket for different applications that kind of became your differentiation. Was that the initial thought, or that kind of evolved when when the company grew? Originally, when I said it was a one type of equipment only in India, so we started with that, of course. Then when we started meeting the customers, we came to understand that no, there is a wide requirement and this particular equipment may not serve the whole requirement. So the moment we came across the different need which cannot be served by the equipment we were having at that time, then we started making another product to suit that. Then step by step we came across the different needs, and we accordingly made the equipments to suit that particular equipment and requirement. And then of course that was made for one equipment or one requirement at that time, but then we worked out as an application engineer where it can further serve. So then we expanded our business to different industries with this the equipments available, but originally developed for one customer need. Okay, okay. And then kind of got evolved based on the applications and then the customer feedback, or so to say the customer needs which you identified in different industries. Great, great. So this is very bang on your answer in terms of the key drivers like you mentioned. I was reading a book which is called as The Momentum Effect. And in fact, the author who was, when he was doing his PhD, he has done a research on, 50 companies who have basically exceptionally grown and their growth was very sustainable. So he surveyed these companies and he identified that, what are the key factors, or so to say the drivers of momentum. So this I would like to keep as the base of my discussion, that there are 3 pillars which are the drivers of momentum. So one is marketing excellence, the second is customer focus, and the third is innovation. So I would like to keep that as a base and then, put you the next set of questions which will be around these pillars. Yeah, sure. So let's start with marketing. So when you talk about marketing excellence, right, you have already told us that one of your product differentiation is that you have a product basket which is catering to different industrial needs and different needs of different industrial applications. What are the key strategies which have helped you market your company over the last 3 decades? See, originally, if you consider long back, the offline marketing was the only thing. So exhibitions, the seminars, and the leaflets, door-to-door visit by a salesperson. Nowadays, that has not been allowed. Of course, the exhibitions are required for the brand building, not for the business generation, I would say, per se. But brand building, yes. So we do
the exhibitions and seminars for the brand creation. But for lead generation, the digital marketing is the only platform right now, I would say. It started with the single website, email marketing, but thereafter the trend changed from email marketing to the social media, posting and all. So we started working on the content creation for the digital marketing platform of the LinkedIn or the Facebook. Nowadays it is also again used for the industrial or business purpose. Earlier it was only the social thing, but now it is used for this, the Twitter, right? There are so many other, like YouTube nowadays. I mean, if you consider, the video is the most required thing for the marketing things. People don't have you can say patience to read or listen all those things. They just want to have a quick look and then understand the things. So the video marketing, and in current era, if you consider, if you are not digitally present, you are not existent. So we have developed 8 different websites for different 8 countries. So one is definitely .com, but then we have for Indonesia, we have for Turkey, we have for Philippines, we have for Thailand, we have for Gulf region, we have for South Africa. Likewise, we have 8 different websites where we are posting our literature, our different posts, and that is generating a lot of leads for us. So digital marketing is required a thing right now. A lot of MSMEs are not investing in that, but the mistake they are making, I would say. So we started with only one marketeer, one lady, to start developing our own website. But there, over a period, now we have 8 people. One for SEO PPC running. Wow! One all of that in-house. In-house, all I'm in-house. Amazed. All in-house. So one for graphic designing, one for the video content creations, one for the text content creations, and then SEO PPC, and the main marketing manager handles all the 8 websites. Great. So nowadays Google also keeps on changing their ranking. So the moment they change their ranking algorithm, your ranking goes down. So you have to change your content, approach and websites. So that is how it is required to do all these things. So we continuously do this. I think almost every day there are 2 or 3 different posts being posted on a social media. I think 3 or 4 different videos being posted. Every day, you are saying? Wow. Every day 3 or 4 posts being created and put. And videos on a continuous basis. Videos, 4 to 5 videos in a month. Wow, that's great. So on our YouTube channel, if you go, I think around 450 roughly videos have been already uploaded. Oh, wow. That's awesome. So like you rightly said that MSMEs, most of the MSMEs, we see that they consider marketing as a secondary function, right? Yeah. So with leaders like you who are able to, envision a longer picture, and they are able to see that, the market needs have changed and the customer is also wanting to see content. When you have a global audience, then you would want to have the content reach to them as soon as possible. And that is something fabulous which you are doing by having a marketing team in-house, and you're working on different strategies for that. So commendable approach, I would say. You talked about video. So like video has been one of the key element of your marketing strategy, right? Yeah. So in terms of having a global audience, do you think video has any, compared to the other marketing strategies, any, upper hand does the video give it to you in terms of reaching to a global audience? Give us your perspective on that. Currently, if you consider, the people don't want to spend too much of time. So their presence time on the media is very little. So if you can catch their attention in 10-15 seconds of the video, then you can have them for the longer. Right. So video definitely is helping us, because within a very short time you can show something, and also you can have audio together. Right. So that makes it more prominent things as a today's marketing tool, I would say. And now you know that shorts are coming up, so people use shorts, though they create a whole video but then convert it into the different shorts and then put it on the media again. Earlier, I mean, we were not getting any lead through YouTube. Okay. But now a lot of leads are also being generated by comments on the YouTube. Oh, great, on a video. Great. So that means you are using video marketing as a customer acquisition channel. Yes. Wow, that's awesome. Yes. Really great. I think you were telling us about video content, that how video content has helped you in particular.
So does it give you a better advantage when it comes to reaching out to a global audience in general, right? As Yeah. compared to the other marketing strategies? Yeah, definitely. I mean, video is helping us to reach a global customer very quickly, I would say. YouTube is very popular everywhere. And when you give a right information, the video gets viral quickly. Now, one of our video where no wheat sieving application video, very ordinarily captured video, but I think now 70,000 plus view has already been reached on that particular video, and it has given us a very good leads also for no flour filtration equipment or flour separation machines. So it is a really a good tool. Videos you can even without speaking also you can show a lot of things. Wow, that's really nice. So, see, generally, when we talk about marketing, it is mainly perceived to be a brand awareness, towards leading towards awareness to about the brand. Yeah. Very rarely do we have an intersection of customer acquisition channel along with the brand awareness. So, then you are driving it very strategically with the power of videos. And I see that you are using a lot of animations also. Yeah. So, when you talk about showcasing of a working product, or how does a product work, so how does animations in general help you in an industrial product marketing? It definitely helps for customers to understand the product very well. uh, just by picture they will not understand what is actually it is making or what are the parts involved, whether it will be useful for me or not. But when you make it animation, you can show how it works also, and you can show the different parts available in that equipment and how it easily you can handle no equipment. Also, That make maintenance part also you can yeah showcase. yeah Okay, yeah. that's So really that nice. gives So, a really ease or trust building for the customer that no, this product is good. yes, so once they are able to see that, what are the USPs of the product, or for example, how easily the maintenance can happen. So, definitely builds a lot of trust. I agree with you on that. So, in terms of marketing excellence, which is the key pillar, are there any memorable campaign which you can think of? Like one of the examples which you already gave it to us, that one of the video had gone viral. Apart from that, can you share with us any other example of a marketing campaign which gave you a great Yeah, see, leverage? what we have found is that general information is not going to work much, but when you give a technical information, now that definitely goes a viral. So whenever we have put any technical video, for example, how to set the machine, so lead angle, our machine has a different lead angle. With different lead angle you can get a different pattern on the screen. So customer doesn't understand that by adjusting my lead angle I can get optimum performance of my machine. So when we put that video on the YouTube channel and then also shared through WhatsApp to all the customers, and we get a lot of good response from the customer that we need this kind of content more. So then we started making such more contents and helping customer to optimize the performance of the equipment what we have sold. So rather than sending our own person there, probably with help of this video we are teaching them to optimize the machine Wow. performance. So the video is kind of serving as a salesperson for you. You Yes. need not send a salesperson door to door. It's Yeah. reaching each and every home of the global audiences you wanted to reach. Yeah. And it's also helping you become your service technician or a service Yes. engineer. So to say True. that, how do you tell about the operation and maintenance, and how Yeah. do you help the customers optimize the performance or the Correct. production efficiency of their machinery output. That's really awesome. Yeah. That was really awesome. I never thought about this use case that it can on the marketing front, like it helps you in customer acquisition on the post the delivery of the machine. So in the customer service also, it is aiding you a lot for training of the customers in the right A fashion. lot of time when customer ask us that no, we have this kind of problem or we want support, then sometimes we only just send the link of that video that you watch this video and you will be able to solve it. If not, then call us.
So That lot is of why time, you've been able to build a library of 400 Yeah. plus videos, Yes. and your customers are only giving you new ideas. So it kind Yeah. of, becomes like a ever evolving library. True. Great. Awesome. I see that you produce a lot of customer testimonial videos also. So how does that help you? कस्टमर के माउथ से किसी ने भी सुन लिया Hmm. तो ब्रह्म वाक्य हो जाता है उसके लिए. Hmm. तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स. Yes. पास्ट में अगर आप देखो तो रिटर्न टेस्टिमोनियल आते थे. हाँ. अभी आज रिटर्न टेस्टिमोनियल का कोई वैल्यू ज़्यादा है नहीं है. है मतलब नहीं. यूजफुल है हाँ. बट कोई यूज़ नहीं करता है. हाँ. हाँ. तो उसकी स्क्रॉल जगह करके चला जाएगा. हाँ वो स्क्रॉल ऐसा करके है. चला जाएगा. उसकी जगह में यूज़र अपना खुद का जब वो Experience एक्सपीरियंस शेयर share करता करता है एंड द बेनिफिट दे हैव अचीव्ड, वो जब शेयर करता है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अदर्स टू नो बिलीव दैट. हम जितना भी मार्केटिंग करें बोले बट अगर हमारा यूजर बोलेगा तो उसकी वैल्यू इज मच हायर देन वॉट एवर वी प्रीच. Absolutely. So definitely we try to get that testimonials and then publish it. Great, great. So marketing excellence as a pillar we have discussed. Now we will move on to our second pillar, which is the customer focus. So I think in your first answer itself, capturing the right needs and the demands of our customers in Yeah. different markets. How have you been able to do that successfully? Given that you have already catering to global markets, so understanding the needs and preferences of your customers, Yeah. first you need to understand their needs, that only you are able to customize the True. products according to their needs. So how have you been able to successfully do that? Yeah, see, we have a very wide sales network so that our person can go in person and meet the customer to understand their need. So we have almost 40 plus salesperson for India as well as global. They keep on visiting the customer, meeting the customer, and nowadays it is very easy. You want to discuss on a team meeting or video conference calls. Sometimes we ask customer to demonstrate or show us their site on a video, and then we see that okay, these are the things they want, so we understand, then we suggest something, and then our technical person also get involved in that video calls. So yeah, then they explain that okay, understand, then we propose some solution to them, and once they say yeah, this is okay, then we start having the commercial discussion thereafter. But first understand the need if any customization is to be done, because our company is known for providing the customized solution. So we don't sell off the shelf kind of things, and that is why you see that there are 20 different products, and within that 20 products, if I add the variants, then I think we have 95 plus Wow. options available Wow. for customers that you've to already choose. delivered customized Yeah. 95 plus variants. Absolutely. Yeah. Really So great. we have that. Plus we have experience of 15,000 plus installations. So a lot of customers need we already have catered, but they are not aware. So once they come up, then you can always share them that okay, this X customer has already been served similar to your need, and they are working. They're satisfied with these things, and you can easily give. But sometimes we need to do customization. I'll give you one example, which is a typical example, I would say. And very rarely you can find in India, I would say that. Okay. There was one customer in Ahmedabad region. They are producing or polishing the sesame seeds. Sesame seeds. Right? Okay. Okay. Now sesame seeds have been supplied to McDonald's at that time. I'm talking 15 years old story. Okay. And they had 95% good quality, accurate quality. Okay. And McDonald's wanted them to improve that. So they already had a complete setup plant, already running plant, right? But they wanted to have some system, improvisation to improve the that. quality of seeds. So our team went there. We have seen the space, all these things. We develop a special product for them, and then we install them with some magnet, inbuilt magnets also. And they could achieve 97.5, and they got a letter from McDonald's, and customer gave us a reference or letter testimonial to us also. So you can understand that when such kind of things are there, normal equipment or normal things won't serve. Yeah, absolutely. So Off the shelf won't work. Yeah, so you have to work with the customer, understand them, be a partner with them, understand the thorough process, and then give a solution. Great. So we are known for that. I would say Galaxy SwiftTech is known for that.
Wow. There are Wow. so many examples I can Wow. go on narrating. Go on and on. Go I on and remember on. you were telling me about one of the interesting defense related applications. Could you tell us more about that? What was the unique application this demand had come in for? And because this is very much part of the same customization thing which we were talking about. Defense sector, no, when the soldiers are being trained. So there's a ground being created where they do all the firings and all. Right. Now continuously that is happening. Now they wanted to take out the bullets when it is misfired. Sometimes you can reuse it. Sometimes only core goes and the cavity remains there, right? And sometimes core also gets there. So they wanted to separate out the core, the usable bullet, and the covers. Okay, and they wanted to count it. Oh, okay. Count it as well. Count it also. Separation is one thing, and then Yeah. counting part. Got it. So we develop a special equipment along with the feeders, vibrating feeders, which counts also. So So this was that a was a unique challenge. application. Yeah, Yeah, I'm that was a sure real this was a challenge. very unique. Yeah. So it gives us a pride. I mean, we have developed some special equipments even for the ISRO, where the rocket launcher, that powders, the fire powders or whatever they call the explosives used, they have been screened in our equipments. So a lot of such things gives us a pride that we are part of a country development, I would say, and the defense. Absolutely. Great, great, great. So when it comes to customer understanding, you have got mechanisms where you understand the customer need. Like, of course, like you mentioned, whether it through the online channels or it through the in-person customer visits and all. Apart from the customer understanding, the next step is also the customer service. Like, you have of course been helping customers by in form of video trainings which you are developing for them to help them leverage the maximum production efficiency. Apart from that, what kind of other customer service initiatives do you take to help your customer? Galaxy Switech has the widest service engineer network. Our service engineers are spread throughout India. So on a call within 24 hours, somebody can help customer to solve. Now, generally it's said that no, it's equipment में problem है. बट वो इक्विपमेंट में प्रॉब्लम काफ़ी टाइम पर नहीं होता है. कस्टमर का जो ऑपरेटर है वो ट्रेन नहीं है, उसने कुछ गलती की है तो भी होता है. सो देन वी गो देयर, वी एक्सप्लेन देम दिस इज अ थिंग्स यू हैव टू ऑपरेट लाइक दिस, and then we solve the problem. Another thing we have started is free health checkup. So whenever my service engineer goes to say Anand area, for example, Anand region, now he's going for some customer visit on a call basis, but then we have 2 or 3 different customers there. So then we make a point to visit, ask service engineer to go to that customer where there is no call. But then we go there, we ask them that okay, we are here to free health checkup of your machine. Then we check the machine, and then we suggest that okay, these are the things which may go wrong over a period, and if you want to buy something as a spare and keep it so that your machine is not stopped for a longer period, then we suggest them. Sometimes we do some technical service required, then greasing kind of things on the motor, then we offer them okay, we'll do that. Wow, without a service call, that is actually truly going, out of the way to help your customers and kind of anticipating what can go wrong so that, that downtime does not come. So you kind of anticipating and providing that kind of extra true customer value, I would say. Really great. Great. So we spoke about customer understanding, we spoke about customer service, and how do you go the extra mile to provide value to the customer. So when it comes to serving the global audiences, there are different kind of challenges which one faces when it comes to understanding the customer needs or catering to the needs of the global audience. So tell us something about how you have been able to ace that. Yeah, so we started with only one export sales manager, but we started with going to the exhibitions and develop the distributor channel there. So we went to Malaysia, we appointed one distributor there. Then we went to Thailand, we appointed a distributor there. Then we went to Bangladesh, we appointed a distributor there. Likewise, we went to different countries.
for exhibition, but the goal was not to acquire the customer directly there, Okay. but Build to a have a supply channel chain partner. network. You Got have it. a channel partner there. Now with that channel partner, we support them for marketing activity also from our end, and then we acquire the customer through them. So when they go to the customer, and if they, I mean, they are not expert, but then we have our own people also visiting with them sometime. Otherwise, as I mentioned, the video calls. So when they go there, they discuss with customer, and then our sales engineer or the technical person sitting from here joins them virtually, and then understands their need, and then we support them providing the right solution. So this is how, I mean, we started with only one country as a Malaysia, but now I think around 50 plus countries already there, and another 50 we are targeting. Wow, So wow, we are that's targeting 100 fabulous. countries minimum to be, serving in a very short span of time now. Are there any nuances in terms of customer service which are different than the country which we are serving here? Of course, India comes with a lot of other different parameters. We have multiple countries within India. So then in that sense, when it comes to global audiences, are there different challenges which you come across? If you consider global market, no, they are never forgiving kind of customers. So if your product is not right, then you will be gone. So first and foremost, definitely your product has to be strong enough to survive, right? The advantage there is that their users are very much, you can say, aware, and they'll take care. Whereas here, if you consider, any layman can be put on the machine to operate, whereas there you will not find. So if you explain thoroughly how to use the machine, normally they use it like that only, and you don't get any major complaints. So they're very methodic. So the problems which are related to the operator training kind of do not come over there in those countries, because the person who is meant for that particular job will only do that job. Not that कि ये free है तो इसको डाल दो हाँ, kind of, वो नहीं ऐसा होता है, नहीं वो नहीं होता है वहाँ पर. है. वहाँ पर डेफिनेटली वो एडवांटेज है कि वो स्किल्ड लेबर को अप्लाई करेंगे वहाँ पर. दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन. वो मशीन उनका प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मशीन बंद हो गई तो पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा. So they understand that, and that is why they want to use the skilled operator to run the machine. So हमें वो दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा करके, ठीक है. बट दिक्कत क्या आती है कभी कभी कि कस्टमर ने इनपुट हमें जो दिया था वो सही नहीं था, या उनको लगा था कि ये है, बट एक्चुअली कुछ डिफरेंट था. तो वो टाइम पर कुछ हो सकता है कि हमें कुछ सपोर्ट करना पड़ता है. तो समटाइम्स वी सेंड आवर इंजीनियर फ्रॉम हियर आल्सो. That is pre-sales stage, right? नो, प्री सेल्स ऑन पोस्ट Post सेल्स. sales both. प्री सेल्स में तो नॉर्मली सेल्स इंजीनियर जाके चाहते ही हैं, समझते requirement हैं, समझते वो हैं. समझ लेते हैं. Right. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे कस्टमर ने बोला कि मेरा, हम जैसा छलनी आटा घर में छानते हैं, बराबर है, अभी मैदा छानो तो डिफरेंट है, और लापसी का आटा छानो तो डिफरेंट है, और दोनों ही बोला जाता है फ्लावर. तो अगर कस्टमर ने क्लैरिफाई नहीं किया कि मैं मैदा छानना चाहता हूँ या वो लापसी वाला आटा छानना चाहता हूँ, तो डिफरेंट हो सकता है. तो मैश जो सिलेक्ट की वो गलत हो सकती है, ठीक है. तो हमें वो सजेस्ट करना पड़ता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट ये है तो इसमें ये लगाओ, आपका काम हो जाएगा. एंड देन वी समटाइम्स वी आस्क देम टू बाय, और वी सप्लाई फ्रॉम हियर, एंड देन इट वर्क्स. सो समथिंग लाइक दैट इट हैपन्स. जो उनको भी एंटिसिपेटेड नहीं था वो चीज़, उनको लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो मालूम ही होगा ना. तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो सही में इम्पोर्टेंट होती है टू डिसाइड व्हाट मशीन और व्हाट नो थिंग्स टू बी. बट उनको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, that they don't share that as a requirement gathering के स्टेज पे, they don't share it. तो with you. पोस्ट सेल भी कभी कभी हमें वो सपोर्ट देना पड़ता है. Oh, okay, excellent, great. So I definitely agree with you that the audience is very different, and then of course the needs and the problems which come along with that are very different, and you've been able to successfully ace that. So when it comes to the third driver of momentum, which is innovation, do you think innovation is a key driver for growth which you have been able to create for Galaxy Civtech? If yes, please share how. Innovation will be required. The changes are constant. Industry is changing, the needs are changing. So if you can't develop something new to cater that new need, you will not survive. We started with one product, I said, and over a period we have now 20 products, right? And still we are developing new products every now and then, because customer wants a different. Earlier, no, they were ready to use the ordinary machine, conventional type machine, and get away. But now they want a right solution.
Okay, and their need is becoming more and more stringent, I would say. ओके, So you have to change that now. एग्जाम्पल दीजिए कैसे स्ट्रिंजेंट बन जैसे- रहा है? एप्लीकेशन तो वही की वही रही है ना. मान लीजिए फार्मा है, सो फार्मा में वही टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे. दवाइयाँ हैं तो पाउडर ही आएगा. मैं ये मेरा लेमैन का अंडरस्टैंडिंग है. बेकरी की मैं एग्जांपल देता हूँ. बेकरी में जो मैदा यूज होता है, यस, ठीक है, तो पहले जब कन्वेंशनल स्क्रीनिंग होता था, ठीक है, तो दे वर यूज्ड टू हैव अ 16 मैश, वी कॉल इट. ओके, सो अराउंड 1000 माइक्रोन, 1 mm की ओपनिंग वाली जाली रफली, आप समझिए, ठीक है, उसमें से छान लेते थे, ठीक है, वो इधर ही कंज्यूम हो जाता था तो चल जाता था. स्लोली स्लोली एक्सपोर्ट स्टार्टेड. तो एक्सपोर्ट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो गलत प्रोडक्ट गया तो वहां से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ. एंड देन सेकंड, नहीं ये तो नहीं चलेगा, आपको तो हमारा स्टैंडर्ड तो 20 मैश है या 25 मैश है, राइट. सो देन कस्टमर वांटेड अ फाइनर मैश. अभी वो धीरे धीरे 40 मैश पर चला गया, 400 माइक्रोन. जो 1000 अच्छा, माइक्रोन हुआ करता था, हाँ. नाउ इट हैज कम टू 400. ओके. और जो 1000 माइक्रोन की जो मशीन थी, प्रिसिशन जो चाहिए आपको एकदम वो अलग अभी चाहिए. सभी नहीं कर पाएगा. Obsolete हो उसमें गई. मैं 400 माइक्रोन डाल भी दूंगा कोई तो मतलब वो नहीं है चलेगा उसका. ही नहीं, वो राइट, चलेगा ही नहीं. राइट. So then you have to develop a new things which gives you that capacity, but with the fine mesh. Like, so it's a stringent norms. So quality norms are becoming more and more stringent. तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट डेवलप नहीं. सेकंड जो चैलेंज अभी मार्केट में हम देख रहे हैं वो है कि पहले जो भी कस्टमर था वो एक्स आउटपुट से काम करता था. नाउ इट इज गोइंग टू 2x 3x 4x, बट उनका प्लांट तो उतना का उतना ही है. They don't want to expand 3x in the space. So they want a compact equipment to give the higher throughputs. So अगर आपने वो innovation नहीं किया तो you can't survive. So you will miss the bus. Absolutely. So every now and then you have to kind of come up with small or big innovations. It can be small tweaks in your machinery as per the compliance standards of the market they are serving, or it could be something, you know, very breakthrough sort of a thing. Great. So give me an example of any breakthrough innovation which your company has done. Of course, you have given us multiple examples, but what would you call as something, a breakthrough innovation which your product development team would have done? From India point of view, if you consider, we were mostly using, I mean India mostly using the round sifters. Okay. Prior to that, there were a centrifugal sifter also being used where the screw turns the product. But the issue was mesh getting damaged. So mesh फट गई तो आपका प्रोडक्ट स्क्रीन हुए बिना निकलना चालू निकल हो जाएगा जाता है. और फिर क्वालिटी के डिफेक्ट्स आएंगे और कंप्लेन आएंगे. तो इसकी वजह से वो जो सेंट्रीफ्यूगल सिफ्टर जिसको बोलते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो गई थी. बट वो प्रोडक्ट बहुत यूजफुल थी व्हेन यू कम टू अ हाई वॉल्यूम स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट. ओके. आपको 10 टन 12 टन 15 टन करना है तो नॉर्मल स्क्रीन नहीं दे पाएगी. यू हैव टू हैव 3-4 इक्विपमेंट्स पुट, सो आपको स्पेस बढ़ जाएगी. सो देन वी स्टडीड दैट कि भाई ये प्रोडक्ट सही है बट उसकी लिमिटेशंस क्या थी. देन वी वर्कड ऑन दैट. उसको वर्क करने के बाद हमने वो नए तरीके से उसको प्रोडक्ट को इनोवेट करके स्टडी बना के लॉन्च किया. ओके. तो आज वो प्रोडक्ट हमारे लिए एकदम अच्छे से चल रही है. अगर आपको, so what do you call that product now? It's a roto sifter. We call it as a roto sifter. It's a rotary screen. Okay. So आज जो आप आशीर्वाद आटा खा रहे हैं, ठीक है, तो आशीर्वाद आटा, सारा आशीर्वाद आटा 90% I would say is screen to our equipment, that roto sifter. And they had a problem of, initially they had a problem of weevils coming in the, जो हम कीड़ा बोलते हैं ना, so that weevil was coming in the flour. Okay. तो उसको अभी वो छान करके उसके थ्रू वो सब eliminated. Got it. So food और pharma में जब आप आते हैं, so compliance is a very different beast when it comes to these industries, right? So वैसे वाले के अंदर तो आपके जो quality standards हैं, जो threshold है वो बहुत ही कम होता होगा, right? तो वैसे वाला, does it not like challenge you a lot to, you know, meet that kind of different compliance requirements? You have to change your product in the sense that processes, I would say, not the product but the processes. For example, अगर food and pharma में आप कर रहे हैं तो आपका welding joint जो है वो एकदम कर्व्ड सरफेस में स्मूथ होना चाहिए ताकि कोई भी पार्टिकल वहाँ अटक ना जाए. वहाँ अटके नहीं तो वो कंटामिनेशन स्टार्ट होगा, फंगस स्टार्ट हो जाएगा. So then we develop a polishing methods with a specialized tools to get that surface requirement. We invested in getting the right surface
जो उसका मेजरमेंट आता है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट, वो करीब इंस्ट्रूमेंट ही 1.5 लाख का है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है मीटू टोयो का, बट वी इन्वेस्टेड इन दैट so that when we produce that part, we check with that whether it is the right standard or not, and then we supply to the customer. So such kind of things you'll have to have no investment done for that kind of things to meet that needs. आपका जो भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें USFDA सर्टिफिकेशन चाहिए. So all those things we have now got it done for our products. Great. So when it comes to innovation, you talk that you have to have a very different kind of mindset in terms of evolving your product, and then product development is a continuous process, and you bring those new products to the market. Apart from that, what kind of internal activities or initiatives does one have to do to ensure that your R&D engineers have that kind of right mindset? See, आपके लिए आपको पता है importance क्या है, वो इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्री में क्वालिटी थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा मायने रखता है, तो आप उसके हिसाब से करेंगे. वो एज अ बिजनेस ओनर यू अंडरस्टैंड दैट, बट हैविंग दैट ट्रांसलेटेड टू योर प्रोडक्शन पीपल और फॉर दैट मैटर टू योर R&D people. So what kind of mindset shift or what kind of processes does one have to follow to ensure that the innovation can be brought to the market? We continuously have our new product development meetings or R&D meetings where all the engineers are sitting together. We explain them that this is the need of the hour and we have to do something new for these things. So that is how it is done. Plus our own research team, business development team, they work on getting this information from the market, that what is 4C. You can say, like if you consider now Industry 4.0 is the new thing here in India, right? Government is also now taking initiative to promote these things, introduce these things. Yeah. So Samarth Udyog, I think, is the Bharat 4.0 is the scheme launched by government. Now it is a very initial stage, right? Absolutely. But over a period it will be requirement. It will be adopted now, by everybody. If my equipment is not suitable for Industry 4.0, then we will be out of the business, right, or will be left behind, right? So we got this information, we discussed internally. So we have taken a first baby step to make an instrument, electronic instrument, which is what we call it iSuitech. So it is intelligent Suitech. So it gives intelligence to our machine, right? So it measures the temperature, the current, the voltage, and temperature of the motor, and it measures the running hours. Now from that we get the indication that okay, this has run for 500 hours. So it gives indication to the operator that this has, now your motor needs a greasing. Okay. So it's a preventive maintenance. Wow, great. Right. So that kind of insights are being given by the machine itself. Yeah. So we discuss these things, that this is what we want to do. So we develop that product, of course, with the help of some external agency, because electronics is not our forte. So we joined with some vendors, we discuss with them, we develop this. Now we are at present, now we are discussing on the next stage. Now if you see in the Industry 4.0, all the data needs to be go to a cloud compounding, and there it has to be analyzed. Right. So reporting is the key factor, because वो data जब तक report form में आएगा नहीं, business owner के लिए कुछ use नहीं है उसका. So जो हमने अभी measure किया, मैंने जो आपको बताया वो सारा data, plus we'll add some more parameters to that. We'll go to the cloud, वहाँ से data analysis होके जो भी हमारा जो software वो ले रहा है, उसका dashboard पर आ जाएगा कि भाई आपका इतना production निकला है आज की, इतना down time था, आपको ये काम करना पड़ेगा करके. So that is the next stage we are doing. Nobody else is thinking right now, but we are doing. So we are taking that next step. So there's internal things which you want to be a leader in the market for the upcoming requirements. So that is also being worked out. Plus customers also ask us that we want this. At present 3D printing is also coming up. Now in 3D printing again, the need is that if the metal powder or the plastic granules, if it is not of right size, the nozzle of the 3D printer will get chopped. Oh, okay. And you will get a defective product. Okay. So there, this screening machine becomes an important part. Wow. So these are the new industries which are kind of industry upcoming. Which is still not been here. I mean, it's just an initial stage, but over a period, they have the future in India. Absolutely. Developed countries are using this. Developing countries are yet to use it. Developing countries. Yeah. And industry from developed countries
are now getting shifted to developing countries. So in terms of the initiatives, you are saying that you have kind of inculcated that in your team, that we need to anticipate what is going on in the market, whether it comes to the business development team or the R&D team. You all come together and then you brainstorm on what is the next level of innovation you need to bring to your products, whether it is in the form of your internal strengths, mechanical or vibratory equipment, or whether it is roping in an external agency for collaborating for the electronics part, because ultimately you need to solve a customer problem. You need to give that value to that customer. Bang on. Nilesh, you spoke about innovation, that innovation has led to, it has been one of the key USPs of Galaxy Civtech. Apart from that, what are the other USPs according to you? See, you have to be near to your customer to understand their need, and customer needs to meet you very easily, right? So you should be approachable, I would say that way, right? Now India is a very big country. Initially when we started, we were having our trial facility at our HO only. But over a period we see that no, from south nobody will come. So then we decided that जैसे ऑटोमोबाइल में कैसा शोरूम होते हैं हर जगह पर, right? So that concept, we said we will have a technical center. So we started with Coimbatore first because that was the farthest, farthest I would say. So वहाँ पर हमने एक start किया. Then we came to Noida, दिल्ली में, मतलब नोएडा में हमने किया. Then we opened another technical center in Mumbai, New Mumbai. Then in Kolkata. And now this 3rd August, we'll be launching our 5th at our Hyderabad center. Wow, that's great. So there we are having our demo machines. There we conduct the trial for customer. We keep some spares so that customer can be served easily. क्योंकि स्पेयर, छोटा सा स्पेयर, एक बोल्ट नहीं है तो मशीन बंद हो जाती है, तो वो अगर इजीली उनको मिल जाए तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर रखा हुआ है. एंड देन वी हैव सम इक्विपमेंट्स वेयर नो bulk trial is required. Now we cannot have bulk trials done at our technical center. So we have kept some machines which we then offer to customer at their site. They do online trials. They run it for 8, 10 days, 15 days, and then they get comfort. And then we get the order. So this technical center is helping us to grow our business, definitely India. Right. Now we are trying to expand this concept with our overseas channel partners. Oh, okay. So last month only we had a agents conference meet where 18 of the overseas team members from different 9 countries, they came, they stayed here for 3 days, and we have discussed with them that this is the concept we have found useful in India. Now we want you to start that. For that demo machines, maybe we will give you at cost, right? So it's a demo machine, you just run it, try it out with customers, gain the confidence of customers, and then generate the business for us. So we are just working out where the space is, because it needs some space. At least 1000 फुट तो मिनिमम चाहिए जगह उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए. तो दे आर वर्किंग आउट कि कहाँ पर उनके पास जगह है नहीं है. So we'll start with 1 machine, 2 machines. Over a period, we have range of 20 different products. We can't put all of them, but at least जो most running है या most useful है, तो वो products से हम लोग वहाँ पर भी start करेंगे. So we are expanding that concept there also now. So that has helped us to definitely grow. And customer is also, when they see the machine, seeing is believing. हाँ, absolutely. So वो खुद देखते हैं कि हाँ भाई ये मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है, मेरा ये लेवल का स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इसके अंदर, और वो ट्रायल है उसकी वजह से दे आर एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन दैट. ऑन एन एवरेज आई थिंक हमारा 5 सेंटर के ऊपर करीब 80 to 100 ट्रायल्स होती है डिफरेंट कस्टमर्स की. ओके, यू आर सेइंग मंथली? वाओ, 80 to 100 ट्रायल्स इन अ मंथ. वाओ, दैट्स ग्रेट. मतलब इंक्लूडिंग हमारे यहाँ पर या हमने मशीन भेजी कस्टमर के पास, राइट, वो सब मिला के अराउंड 80 to 100. वाओ, ग्रेट. Great. So that kind of lead channel you have kind of built already through your distribution, your channel partners, as well as through your online presence as well. Great, great. So is that a concept which is common in the manufacturing industry, or you are kind of pioneers of this concept? I would say for our kind of industry, we are the pioneer. Okay. But some of the big organizations they have. Like अगर आप समझो वेल्डिंग रोड वाले हैं, तो वेल्डिंग रोड वाले का डेमो होता है कि वो दिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं.
तो वो सब होता है. Normally that is through their channel partners, Right. not their own directly. बहुत कम है जो ओन करते हैं. ज़्यादातर लोग जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आई नो ऑफ KYB कॉन्वेंट, तो उन लोगों के केस में क्या है कि वो लोग एग्जीबिशन स्पेस में ही इतना बड़ा ट्रायल का रख देते हैं कि वहाँ पे वो लोग ट्रायल कराते हैं. मे बी दैट इज़ अनदर वे, बट देन दैट इज़ वन ऑफ, बिकॉज लिमिटेड है. आप एग्जीबिशन के अंदर जो कस्टमर आ रहे हैं उनको ही आप केटर कर पा रहे हो. बाकी के टाइम में अगर कोई बड़ा एग्जीबिशन नहीं है तो आपके कस्टमर को ट्रायल करना है तो आप साल में एक बार वेट नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए. हमने एक्स्ट्रा उसमें ऐसा किया हुआ है कि हम कस्टमर कभी आ नहीं सकता है, बहुत दूर है, या जैसे ओवरसीज का कस्टमर है, दे वांट टू सी सम ट्रायल्स, वहाँ पर मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. So then we have created a facility where we can show them a live video trial in our test center. ओके. So they can witness it. तो वो जो मटेरियल वो जो वहाँ यूज करने वहाँ वाले use हैं करते हैं, वो हम यहाँ प्रोसेसिंग में, वो procure यहाँ करते हैं. प्रोक्योर हम करते हो procure एंड देन करते यू हैं. शो देम उसको द show ट्रायल देते थ्रू द लाइव वीडियो. दैट इज अ ग्रेट थिंग. तो वो उसका तो मतलब फिर वही सीइंग इज बिलीविंग वाला हाँ, चीज आ गया कि correct. उसने लाइव देख लिया, उसके आंखों के सामने पता चल गया उसको. My next question to you would be on the lines of the three drivers which we have discussed which create momentum for the exceptional growth of companies. You have discussed in a way how you have been able to capitalize that. But it's not just about those drivers, it's also about the leader who is behind that. So now I want to know more about this leader. So what got me curious is that, you know, as a civil engineer, after multiple years of entrepreneurship, you did a postgraduate course in digital marketing, and that is something I would like to know, that, you know, what was your inspiration or what was your thought behind taking that leap towards learning. See, any entrepreneur, you may have your team, but you should have the basic knowledge. Otherwise, you'll not be able to give the right decision. So when we started our journey for the digital marketing things, I decided that I should have the basic knowledge. Without that, I'll not be able to give inputs. I'll not understand their terminologies. So I have to get that things done. So I opted for that postgraduate course through NMIMS. Of course, it was a long distance, distance for learning. But I learned that, and that has helped me to really understand what is the digital marketing, and that learning is helping me now personally also for my promotion I am doing. So that is helping me, and I'm able to give a lot of inputs to my team. When you go through these things, you can start learning from different mentors. You mentioned something Right, yes, earlier. yes. No, you should have some kind of mentors. Now, in these things right now, it is may not be required to have a physical mentor. Yeah. You have a lot of You can mentors capitalize available. mentors available online. across the globe. So I see a lot of video of Gary Vee, and I understand a lot of gimmicks of the marketing from him, and I use with our team to understand that, discuss that, and then we use that also in our these things. In your crafting your marketing Yeah. strategies, so to say. Wow, that's really awesome. So very inspirational, because see, one as an entrepreneur must keep on continuously learning. That is one of the key things which makes a entrepreneur different and helps them to lead their teams in different direction. Other thing which I admire about you is that you talk a lot in general about the spiritual quotient. So as an entrepreneur, you have been like working, spending a lot of your time. You don a content creator hat, you have your own YouTube channel, and you are associated with multiple non-profits. So I wanted to understand and know from you, how does having a spiritual quotient help in the entrepreneur's growth journey? It is very much important. I would say if you have IQ, you can get a job. If you have EQ, you can still become a manager level position person. But unless you have proper SQ, you cannot become a leader or entrepreneur. Because you have to maintain a team, manage the team, motivate the team, at the same time solve the problems also, and solve the other problems also. Now for that, this needs to be very calm. Unless and until your mind is calm, you cannot get the right information analyzed and give the right decision. So I was fortunate enough that in my earlier, early part of the career, I got connected with the spiritual master, corporate guru, Swami Sukhbodhananda, Prasanna Trust. There I got a real good input to know how to control your mind. And that has helped me a lot.
thereafter definitely I have worked with so many other NGOs, and I'm learning a lot. Still today I would say when I get the time, Yuvala is a organization where every Sunday there's some sort of seminar, 2 hours seminar is being done in Baroda. So I'm a member there. I Okay. have given 3 lectures there also, Okay. but a lot of time I'm sitting on the opposite side as a student. Wow. So whenever I get time, I do learn. You put And I have met yourself a lot in the of, shoes of you become yeah, the student yourself. yeah, and Great. there I have met a lot of mentors, I would say, trainers, and they have been fabulous, I would say. And what inspired you to create your own content? You have your own YouTube channel. Tell us more about that. During COVID, when we were at home, मुझे वीडियो देखने का शौक है, तो मैं वीडियो सर्च करता रहता था. तभी वो इवान कारमाइकल का भी मैंने पूरा सीरीज देखा था, विवेक बिंद्रा जी का भी देखा था. सो आई फाउंड कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज अवेलेबल इन आइदर मोस्टली इन इंग्लिश और मेजोरिटी इन हिंदी. लोकल लैंग्वेज गुजराती में कुछ बहुत ही कम मिला. थे 1 या 2 थे, बट उतना पॉपुलर नहीं था. और मैं गुजराती मीडियम से पढ़ के आया हूँ. सो आई वांटेड टू हैव समथिंग डन फॉर अ गुजराती मीडियम में जो बड़े हुए हैं, वो यूथ के लिए कुछ करना था. सो देन आई सेड व्हाई नॉट. सो मैं स्टार्ट किया, जस्ट 1 मिनट का एक जो कुछ थॉट है उसको एक्सप्लेन करने का वीडियो से स्टार्ट किया. देन स्लोली मुझे लगा कि नहीं, उसको एक्सपांड करना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए. सो देन आई मूव टूवर्ड्स गिविंग सम स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एंड देन एक्सप्लेन द मोरल ऑफ दैट स्टोरी. सो ऐसा करते हुए आज 225 प्लस वीडियोस बना चुके हैं. वाओ वाओ, दैट्स सो इंस्पिरेशनल. ग्रेट. तो उसका जो आपका जो वाई है वो क्या है? मतलब अल्टीमेटली जब आपने शुरू किया था आपको अच्छा लगा, आपने बोला वन ऑफ द वाइज यू सेड इज ऑफ कोर्स कि गुजराती में कंटेंट नहीं है, बट देन लाइक यू सेड इट इज मोर आई कैन सी विद इंस्पायरिंग पीपल. आप यूथ के लिए कर रहे हैं, बट वो यूथ के लिए करने का रीज़न, आपका जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? कोई भी कंट्री का फ्यूचर तो यूथ के हाथ में ही है. तो अगर यूथ जितना अच्छे से डेवलप होगा उतना कंट्री को फ़ायदा होगा. सो मैंने मेरा एक गोल बना के रखा है कि मिनिमम 10,000 पीपल शुड गेट सम पॉजिटिव इम्पैक्ट थ्रू माय कंटेंट क्रिएशन. सो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने अभी तक किया, बट अभी तक 805 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. तो उतना भी तो मेरे लिए अच्छा है कि चलो मैं एक 10% तक तो पहुंच गया हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ. एंड दैट्स द गोल कि वो करना है. हमारे चैनल में मोमेंटम मास्टर्स जो है, वी टॉक अ लॉट अबाउट जब शुरू करना होता है कोई चीज़ बहुत मुश्किल होता है, और फिर बाद में मोमेंटम मेंटेन रखना वो भी और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो जब आप ऑलरेडी ये लेवल पे सीईओ लेवल पे हैं, आपके पास और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउ आर यू एबल टू मेंटेन दैट मोमेंटम ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट अलोंगसाइड विद योर एंटरप्रेन्योरशिप task as a you are donning multiple hats? So how are you able to maintain that momentum of creating content? What is the kind of discipline that does an entrepreneur require for something like this? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो नहीं होने वाला है, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी. आपका खुद का इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए. सो जो मैंने गोल सेट किया है तो आई एम वर्किंग फॉर दैट गोल. दैट ड्राइव्स मी कि नहीं करना ही है. कभी कभी होता है कि यार जल्द ये जाने देते हैं, बट देन स्टिल नो, लेट अस डू इट. तो आपने क्या फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया है? एवरी वीक यू डू वन वीडियो. इन बिटवीन मैंने एक महीने के लिए मतलब बंद किया था, बट अदरवाइज नॉर्मली एवरी संडे आई अपलोड. वाओ, एवरी संडे. ग्रेट कंसिस्टेंसी. तो वो एक है कि वो करना ही चाहिए. कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो जो आपने किया वो मोमेंटम टूट जाएगा. तो कुछ भी हो, आप इनोवेशन कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री में कुछ मूवमेंट कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो तो चलेगा ही नहीं. तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें से आपका रूटीन में से भी टाइम निकाल लोगे. मैंने काफ़ी सारे वीडियो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे भी शूट किए हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह रखना था. तो शनिवार को रात को भी शूट किया है, खुद एडिटिंग करके उसको कंप्लीट किया हुआ है. अच्छा, आप खुद कर रहे हैं आपके चैनल के लिए? एवरीथिंग आई डू माय ओन. वाओ, ग्रेट. तो मुझे एक फॉर्चुनेटली BNI के बॉम्बे के एक मेंबर है, योगेश MA करके है, वो मिल गए थे मुझे जब इंटरनेशनल कन्वेंशन में मैं गया था. उसके बाद ही मैं लिंक्डइन पर कुछ प्रमोट करता रहता हूँ.
He offered me a special training on the how to be an influencer. Okay, तो great. जो अदरवाइज वो चार्ज करता है 20,000 रुपीज, हाँ, ही हाँ. गिव मी फ्री. अच्छा. इट वॉज 3 hours पूरा ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दिया. सो दिया. आई थैंक हिम फॉर Wow. दिस थिंग्स एंड ही एक्सप्लेन मी कि आप कंसिस्टेंटली आप करोगे तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा. सो मैं वो करता रहूँ. अभी भी बीच बीच में उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे इनपुट ले लेता हूँ क्या करना है, क्या कैसे होना चाहिए. Okay, okay. सो दैट हेल्प्स मी. So tell us, what is your channel called? इट इज़ NK विचार श्रेणी. सो NK इज़ फॉर नीलेश खिमशरिया एंड इट्स अ विचार श्रेणी. सो विचार को मैंने सीरीज में डाला हुआ है. इनिशियली स्टार्टेड विद माय थॉट्स, देन एडेड द स्टोरीज. वो स्टोरी के पीछे मेरे थॉट्स बाद में, तो वो करता रहता हूँ. प्लस एवरी डे मॉर्निंग आई पुट अ गुड थॉट ऑन माय मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. LinkedIn Instagram. also, I think you have around Yeah. 18,000 plus followers. Yeah. Yeah, that is a great thing which you have been doing. I think consistency की वजह से ही वो चीज़ हो पाती है. आप YouTube देख लीजिए या आप वो देख लीजिए, वो आपके हर एक एलिमेंट के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है. अगर आप एक वो डिसाइड कर लेते हैं, फिर देन क्वालिटी से ज़्यादा उस टाइम पे आपको ये होता है कि नहीं, ये मेरा एक टाइम पीरियड जो मैंने डिसाइड किया है वो मेरे लिए मैटर करता है. इवेंचुअली क्वालिटी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट? मैं आज वो मेरा पहला वीडियो देखूंगा और आज का वीडियो देखूंगा तो बहुत फर्क हो गया है, क्योंकि ओवर अ पीरियड आप भी लर्न करते हो. तो होता ही है. सो इट हैज हेल्प्ड. नीलेश जी, लाइक वी टॉक कि स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, बट फिर उसको कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल होता है. और आपने बताया कि आप जो है वो एक डिसिप्लिन और एक आपका जो वाई है कि जो आपको यूथ को इंस्पायर करना है. बट काफ़ी सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपका मोटिवेशनल कोड से रिलेटेड या मोटिवेशनल पॉजिटिविटी से रिलेटेड कंटेंट है. तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब खुद आपके बिजनेस में कुछ हुआ है या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, वेर यू आर नॉट फीलिंग लाइक क्रिएटिंग कंटेंट. तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं, और आप क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप वापस से सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो करना है, मैं करूँगा कुछ ना कुछ मेरा पोस्ट कल के दिन में? तो एक तो कंसिस्टेंसी, मैंने जैसे बताया ना कि नॉर्मली कैसा होता है कि काफ़ी मैंने जो हमारे एक ट्रेनर थे हिमांशु बूच, डॉक्टर हिमांशु बूच, अगर आप जानते भी होंगे, शायद बड़ौदा के फेमस है. उनका एक प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा ही बात किया था कि आप जैसे भी ऐसा कुछ करना चाहते हो, एट दैट टाइम इट वाज मेनली फॉर द योगा और एक्सरसाइज. ही सेड कि आपने 365 डेज में से 360 डेज किया और लास्ट का 5 दिन आप नहीं कर रहे हो तो यू आर एट ज़ीरो. सो वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अगर आप कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव लेते हो तो आपको कंटिन्यू तो करना ही है, कंसिस्टेंटली करना ही करना है. और सेम थिंग जब यूट्यूब का मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं. तो उनमें से भी काफ़ी लोगों ने ऐसा ही बोला कि अगर आप भले ही कंसिस्टेंसी जो है आप 15 दिन में एक रखना चाहते हो तो 15 दिन में एक रखो या महीने में एक रखो, बट वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मेंटेन वो पकड़ के चलो. ठीक है. तो वो 2-3 चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी. काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यार आज नहीं करना है, छोड़ देते हैं. ठीक है. बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि वो टाइम पर यूट्यूब में से ही कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो या सॉन्ग, जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो देख लेता हूँ और अपने आप को चार्ज कर लेता हूँ कि नहीं यार करना तो है. और बाद में मुझे याद आता है कि मेरा गोल तो है 10,000 यूथ को इंस्पायर करना, तो अभी तो वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों बंद करूँ, नहीं करना चाहिए मुझे. सो वो एक सोच के साथ फिर मैं वापस रिचार्ज हो जाता हूँ और उसको कर लेता हूँ कि भाई नहीं करना ही है. So going forward, we have spoken about what makes you the leader. It is a lot about continuous learning. It is a lot about having a positive state of mind, and focusing on consistency, discipline, the essential ingredients which everybody talks about. When it comes to your entrepreneurship journey, it's been 3 decades. So what are the key lessons you would want to share with somebody who is trying to generate the kind of momentum in the manufacturing industry? The manufacturing industry, the trends are changing. I mean, earlier it was all conventional machines. Then it came to advanced technology या CNC type of machines आ गए और आज robotics में जा रहे हैं. तो अगर आपको एडवांटेज जो है ऐसा उसके लिए तैयार नहीं करोगे, उसको रेडी नहीं करोगे, अपने आप को आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चेंज करने के लिए नहीं करोगे, तो यू विल नॉट सर्वाइव. तो दैट इज़ वन थिंग विच वी आर डूइंग. आई मीन वी आर नाउ वर्किंग ऑन bringing the robotic or IoTs or AIs के related
जो भी हो सकता है हमारी मदर मशीनरी में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मशीन्स विच वी आर सेलिंग. आई एम टॉकिंग फॉर द मशीन्स which you use for which we producing use the for machinery. producing the machines. Got it. So for that also now we are working कि उसको कैसे हम मोर ऑर्डर, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आएगी. ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो आज चाय अच्छी मिली तो काम अच्छा होगा, घर पे डांट मिली तो काम खराब हो जाता है. ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. तो उससे बाहर आना है तो आपको कम स्किल मशीन ऑटोमेटेड काम कर सके वैसा करना पड़ेगा. सो वी आर Reduce the manual dependency. या Got तो it. वो And उसके leverage the ऊपर technology. So Yeah. that is one key advice you would want to give, or so a that key that is what lesson. we are doing, and I would advise all the MSME to look forward for that kind of things कि जो इंडस्ट्री आगे चल रही है अगर आप वो एडप्ट नहीं करोगे तो एडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, या पुराने ही ख्याल से चलते रहोगे तो वो नहीं चलेगा. सो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग, यू हैव टू गेट मॉडर्न योरसेल्फ, वो करना पड़ेगा. सेकंड इज सिस्टम. आज MSMEs में अगर आप देखो तो CRM, ERP वो सब कोई नहीं यूज कर रहा है. ठीक है, बट वी आर यूजिंग सिंस 10 years. धीरे धीरे शुरू क्योंकि हुआ वो- है. वो ये कि हाँ. एक एलिमेंट है, लाइक यू सेड, सरवाइव कर जाओगे बट थ्राइव. हाँ. सरवाइव एंड थ्राइव आर टू डिफरेंट थिंग्स, Yeah. राइट? तो सरवाइव तो कर रहे हैं वो लोग, Yes. बट दे अब उसमें एक्सेल करना है, उसके अंदर वो एक्सेप्शनल ग्रोथ की आप बात कर रहे हो तो वो नहीं आएगा. उसके लिए आई थिंक वन ऑफ द की एलिमेंट्स इज दैट. Right. Using the right technology, whether Yeah, it right comes to the technology, production, whether it comes to digitalization, equipping yourself with, the modern leverage which you have in the market. And do you think particularly in India, do we have any kind of advantage when it comes to manufacturing sector? Yeah, definitely. I mean, इंडिया का जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत ही सुपर्ब है. Okay. जो सॉल्यूशन आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा वो इंडिया का इंजीनियर ला के दे सकता है. उसको चैनलाइज करने की जरूरत है Okay. प्रॉपर वे में. वही जुगाड़ को बाद में हर बार वो जुगाड़ सही तरीके से कैसे होगा उसके वो लिए सिस्टम सिस्टम में बना लाना दो. वो बहुत जरूरी है. जी. तो इंडियन का ब्रेन तो आज कहीं पर भी देखो तो इंडिया का ब्रेन डेफिनेटली नोन है. Yes. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो है ही है, हाँ. बट इंजीनियरिंग में भी है. Engineering में we are और known for quali- reverse engineering. Yes, Yes. yes. We kind of dissect and reverse engineer, Yeah. and then we innovate. Yeah. So our processes are different. But then how do you bring the method to that madness? या तो वो बहुत है. इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी. जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चालू किया था गवर्नमेंट ने, दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल नो टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. और आज इंडिया की प्रोडक्ट की ओवरसीज में वैल्यू है जो पहले इंडिया की प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करते थे लोग कि वो इंडिया का माल है, नहीं लेना है. आपको लगता है वो परसेप्शन अब चेंज हुआ है? बिकॉज आप ऑलरेडी 40 कंट्रीज में तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और गोइंग फॉरवर्ड तो वो परसेप्शन अब किस तरीके से लोग देख रहे हैं? नहीं, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स थे अर्लियर दे वर नॉट कंसिडरिंग एज अ क्वालिटी को देना चाहिए, बट नाउ क्वालिटी इज टेकन एज अ ग्रांटेड थिंग इन ओवरसीज मार्केट. तो अगर आप क्वालिटी दोगे ही नहीं तो चलोगे ही नहीं. तो दैट अवेयरनेस हैज़ बीन देयर नाउ, और उसी की वजह से काफ़ी सारी एडवांस्ड मशीनरीज यूज़ होना चालू हो गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. और उसी की वजह से आज आपको अच्छी प्रोडक्ट इंडिया बना पा रहा है इंडियन और वो मैन्युफैक्चरर्स, एक्सेप्टेंस भी उसी की वजह से आया है. ग्रेट. वो एक्सेप्टेंस बढ़ा हुआ है. सो दैट इज़ फॉर श्योर. तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत है. और आज अब देखो स्टार्टअप में भी अभी इंडिया बहुत आगे निकल रहा है. जो पहले बहुत कम था आज बहुत सारा आगे चल रहा है. तो ये सब देखते हुए इंडिया के लिए स्कोप बहुत है, और MSME के लिए भी बहुत स्कोप है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डेफिनेटली यू कैन लीप्स एंड बाउंड्स में आप ग्रो कर सकते हो अगर आप ये सारे फैक्टर्स जो भी है उसके ऊपर काम करो. और जो अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट नॉर्मली हमारा ओनर जो फैमिली ओन कंपनीज होती है वहाँ पर आप डेलीगेट करना नहीं चाहते हो, सारी पावर आपके पास रखना चाहते हो. ठीक है, सारा डिसीजन मुझे पीछे बिना नहीं होना चाहिए, बट वो नहीं चलेगा. अगर आपको ग्रो करना है तो यू शुड हैव अ सिस्टम, यू शुड हैव अ टीम. जो सेकंड लाइन टीम डेवलप करनी पड़ेगी, वो टीम आप ऐसी हायर करो कि उनके पास वो नॉलेज है, एंड देन गिव देम द फ्रीडम, तभी होगा. तो आज मेरे पास मेरी टीम है पूरी, जो मेरे 8 या 9 रिपोर्ट ही है मेरे. तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे विद देम. जब उनको कुछ लगता है तो दे ऑलवेज कम टू मी, दे आस्क मी, बट अदरवाइज वी हैव सम रिव्यू मैकेनिज्म, दैट्स इट. दे रन द शो.
So that is what they, I mean, the MSMEs entrepreneurs will Need have to to do. हाँ. do this. वो Absolutely. डेलीगेट करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, वो टीम को डेलीगेट भी करना पड़ेगा. और गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी. गलतियां भी होगी, गलतियां होगी, उसको समझना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर आवर एम्प्लॉइज. तभी जाके आज ये लेवल पर है कि वो दे आर एबल टू डू on their own. Right. So, like when you say family-owned business, yours is like you are the first generation entrepreneur, right? It was. Okay. Okay. Originally, it Right. was a family owned. Acha, But okay. in You 2000 acquired the company. But 2006, it was different then. Okay. So Okay. thereafter, it's investors are there who Acha. has invested, Right. 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 and then now we are working with them. Right. So now it is a professionally run Yes, company. now it's a Prior to professional. this, it was a family-owned business. So the unique insights which you are giving for family-owned business, particularly that is the case that these people are not able to build their second line of leaders because they want to retain the control. वो लाला कंपनी वाला जो typical mindset रहता है कि control मेरे पास ही रहेगा, अपनी इधर का गुंडा बोलो कुछ भी बोलो वो सब मैं ही हूँ, right? Got it. So ये हो गए हमारे कंपनी लेवल पे जो चेंजेस थे वो आपने कुछ उसके रिलेटेड की लेसन्स यू हैव शेयर्ड दैट यू नो एज अ कंपनी व्हाट ऑल यू नीड टू एम्ब्रेस एंड वन ऑफ यू पॉइंटर्स लाइक यू सेड एज अ एंटरप्रेन्योर व्हाट यू नीड टू डेवलप. Are there any other key lessons you would want to or key advice you would want to give to an entrepreneur who is scaling up their company? It can be any domain, manufacturing, services, trading, anything. So people development, system development, quality of the product or service, these are the 3 parameters which is very much important. और उसके अलावा जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा. जब तक आप खुद एडेप्टेबल नहीं होगे तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे. तो चेंज तो कांस्टेंट है, वो आने ही वाला है, तो वो आपको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा. अगर रिस्क नहीं लोगे तो भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो यू ऑफकोर्स यू कैन हैव अ कैलकुलेटेड रिस्क, बट रिस्क लेना पड़ेगा. यू कैन नॉट एवरी टाइम प्ले सेफ, तो वो करना पड़ेगा. तो ये सब करते हैं. एंड खुद को भी डेवलप करो, लर्न करो, नई टेक्नोलॉजी या नए जो भी आ रहे हैं, नए इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, डिमांड क्या आ रही है, वो फोर्सी करना पड़ेगा. तभी जाके आप आपकी कंपनी को एक नया ड्राइव दे पाओगे, नया मोमेंटम दे पाओगे आप. Great. So going back to one of the previous things which you mentioned about the perception of the global audience that has changed now, since you keep on participating in a lot of global exhibitions, how have you seen that come to play, right? You know, when you were participating in the earlier days versus now, how people perceive you, how has the equation changed that on a global level? So on a global level, if you consider your consistent presence is the prime factor to build a trust. Okay. भले ही आपको बिजनेस ना मिले, हाँ. बट आपको कंसिस्टेंटली वो एग्जीबिशन में दिखना जरूरी है. विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी आएगी तभी लीड्स टू क्रेडिबिलिटी. या देन इट लीड्स टू क्रेडिबिलिटी. राइट. तो वो विजिबिलिटी हमने स्टार्ट किया था, उसको गया वहाँ पर. हमारा बंदा जो हमारा सेल्स पर्सन है, नॉर्मली एमएसएमई में ओवरसीज में किसी को भेजना है तो ओनर खुद ही जाएगा, एग्जीबिशन में भी है या विजिट में ओनर खुद जाने की कोशिश करेगा. बट हमने वैसा नहीं किया है. हमने हमारी पूरी टीम को डेवलप किया है. दे आर गोइंग, सो दे आर बिकमिंग देयर फेस ऑफ द कंपनी एंड दे वो खुद को एंटरप्रेन्योर समझता है. कि मेरे लिए तो मेरी कंपनी के लिए मैं ही फेस हूँ, मैं ही एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को ही बिजनेस लाना है. और सामने वाला भी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है क्योंकि वो हर बार जाके फेस दिखाता है. भले ही बिजनेस 2 साल के बाद आया हो, बट उसको वो कंपनी में विजिट 4 या 5 बार की गई होगी, तभी जाके उसको फेथ हुआ है कि ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, आके एक बार बेच के चले जाने के लिए नहीं है. तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है. ये अभी हमारा इन्वेस्टमेंट था इनिशियल पीरियड में, बट अभी उसका रिटर्न आना चालू हुआ. Absolutely. So that is required. Absolutely. So that is from the company's point of view that they need to be visible, and then that visibility will lead to the credibility. But in general, the image of India as like the Make in India products have improved in terms of quality overseas, and that acceptance has come. How have you seen that manifesting in terms of words? Are you seeing any kind of impact or any kind of feedback which you're hearing from your global customers about perception of India changing? What are the insights you have heard about them, about India in general or Make in India products from your global audiences? I'm very keen to hear that as well. See, we are getting very positive feedbacks about our products supplied to them.
they are already comparing it with the developed country products they are using, right? But price pressure is everywhere now. In developed countries भी अगर आप देखोगे तो उनके ऊपर भी price pressure है. So they are also looking for the cost optimization, right? So they are searching. So when they know these things, then they adapt it, but they go very cautiously. तो एक ही झटके में धड़ाधड़ ले नहीं लेंगे. So पहले वो small छोटा मशीन लेके छोटा try लेंगे, करेंगे. देखेंगे सब सही सही चल रहा है नहीं चल रहा है, हाँ. then they will go. So अभी हमारा ओवरसीज में भी रिपीट बिजनेस बढ़ रहा है, जो पहले उतना नहीं था, बट अभी रिपीट बिजनेस बढ़ रहा है. जो कस्टमर्स ने एक बार लिया, यूज़ किया, उनको सही लगा कि जो मैंने डेवलप कंट्री से लिया हुआ था, मतलब यूरोपियन मशीनरी थी मेरे पास, उसके पैरेलल ये मशीन भी वर्क कर रही है, देन व्हाई आई शुड गो फॉर यूरोपियन मशीन. I am getting the cost advantage, I am getting the same quality. So they are coming back again and again now. Got it. So that is that's what, and slowly when we are going there, तो जहाँ कस्टमर की साइट के ऊपर भी हम जाते हैं हमारी मशीन का इंस्टॉलेशन के लिए या ऐसे विजिट्स के लिए, तो वहाँ पर तभी भी देखते हैं तो काफ़ी सारी इंडियन मशीन्स अभी दिखती है, अदर प्रोडक्ट्स. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि नाउ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट वो बढ़ गया है डेफिनेटली. Now we are coming towards the end of our session. We would like to hear what are your growth plans for Galaxy Civtech and how do you continue to create the same kind of momentum for the growth? What are your plans? Please share with us. I'll take you little bit back when मैंने जैसा आपको बताया कि जब मैनेजमेंट चेंज हुआ और हमने प्रोफेशनल में गए, तो एट दैट टाइम नो प्रीवियस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ था. जब ये चेंज ओवर आया तो इट ड्रॉप डाउन टू 1 करोड़. ओके 1 करोड़ के साथ सरवाइव करना, लोगों को मोटिवेट करके रखना वाज अ प्रॉब्लम. सो एट दैट टाइम आई हैड रेड वन बुक कॉल्ड हाई फाइव. ओके उसमें टीम वर्क और मोटिवेशन के ऊपर था, तो उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा स्लोगन बनाया था. वो तभी उनको बताया था कि 10 में 20, मतलब 10 years में वी विल बी 20 करोड़. तो 1 करोड़ से 20 करोड़ इज अ बिग ड्रीम हो जाता है, गोल हो जाता है लोगों के लिए और मोटिवेट करता है. सो वो करते हुए उनको मैंने किया. आपने शुरुआत के 10 सालों में मतलब ऐसा डिसाइड किया कि आप 1 CR से 20 CR जाएंगे इन 2006 में हमने चेंज किया. सो वी सेड के 2016 में 20 करोड़ हमें पहुंचना है. ठीक है, जो पहले था उसका डबल कर देना है. ठीक है, सो वो एक गोल लेके चले. तो 2016 में भी क्रॉस 20. वो टाइम पर भी नेक्स्ट हमने कॉइन किया कि भाई 20/50, मतलब 2021 में हमें 50 करोड़ करना है. सो अनदर माइलस्टोन शोन टू ऑल द मेंबर्स. ठीक है, उसके हिसाब से जो भी काम करना था वो तो बैकएंड में करना ही पड़ेगा. खाली बोलने से कुछ नहीं हो जाता है. तो आपको आपकी टीम को तैयार करना है, वो हिसाब से फैसिलिटीज करनी है, मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्क बढ़ाना, जो भी था वो सारा सब बैकएंड में तो सारा स्ट्रेटेजिकली वर्क हुआ ही हुआ. So unfortunately, because of that COVID year, we missed it by 1 year. So instead of 2021, in 21-22, we completed 50. Wow. एक साल का gap, I don't think that is, you were already like on track. तो करीब 16 साल का अगर आप जर्नी पकड़ो जब से हमने ये नया उसके साथ प्रोफेशनल में स्टार्ट किया है, और CAGR is 20.1%, 20.9% of 16 years CAGR. Now we are aiming for 100 crore. Wow. वो 100 crore 26-27 में हमें क्रॉस करना है. Okay. That is the target which you have set. So that is what. So we foresee some milestone and then motivate the team. और उसके हिसाब से जो भी चेंज करना है वो करते गए. जैसे अगर मैंने फैसिलिटी का अगर मैं बोलूँ तो हम 2006 में वाघोड़िया में ही एक छोटी सी फैसिलिटी में थे. 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड था और उसमें 10,000 की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी. ठीक है, जब हमने एक कंसिडरेशन किया कि हमें 20 करोड़ करना है तो ये प्रॉपर्टी में नहीं होने वाला था. ठीक है, सो 2011 में हम शिफ्ट हो गए विच 3 times बिगर लैंड. 60,000 की लैंड थी और उसमें 30,000 का कंस्ट्रक्शन किया. बाद में उसको और थोड़ा सा बढ़ाया था. ठीक है, वहाँ पर ये पहुँचने के बाद देन वी सी कि नहीं अभी और आगे जब चलना है 100 करोड़ के लिए, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. सो वी स्टार्टेड वर्किंग और अभी हम उसके भी बड़ी जगह में चले गए. सो डबल द स्पेस. अभी जो हमारा प्लॉट है वो अराउंड 1,50,000 का प्लॉट है और उसमें 60,000 का हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. सो वी हैव मेड अवर सेल्फ रेडी फॉर दैट मच इन एडवांस.
Great. So that you are, in terms of your growth plan, you are very much on track. You are already simultaneously working in terms of whether in terms of procuring the right people, in terms of procuring the right, so to say, digital machines, which you're talking about, digitalization of your entire production. Of course, starting with the infrastructure expansion, which is very much required. Great. And the right mindset, of course, is already there. Great. पहले जो बनाते थे मशीन की क्वांटिटी पर मंथ हमारा 15 से 20 मशीन होता था. आज वी हैव रीच 220 एंड वी आर एमिंग टू हैव 200 मशीन्स पर मंथ. ओके. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. आगे चल के जब 100 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो विल हैव टू हैव एटलीस्ट 200 मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग. तो वो सारा मैन्युअली करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट ऑटोमेशन. Great. The last question I would like to know from you is, what are the few things which you really feel proud about? सबसे पहले तो मैं जो प्राउड फील कर रहा हूँ, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आई एम रनिंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी. So that is one of the proud thing I would say for me, right? Second thing is studied in Gujarati medium throughout and still running an MNC kind of company. At present, we have around 150, 170 on roll. Okay. And plus blue collar on contractual. So around 300. Wow, around 300 people. Great, great. Yeah. Coming from a middle class, फिर भी मेरे फादर ने हमें इतना अच्छा एजुकेशन दिया था और उनकी जो ट्रेनिंग थी जो भी है उसकी वजह से मेरी कॉमन सेंस बहुत अच्छी डेवलप हुई है, जिसकी वजह से आज डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इजी फॉर मी. आई कैन जज द सिचुएशन और क्विक मुझे आता है कि ये ऐसे करने से सॉल्व हो जाएगा. तो दैट इज़ ओनली हेल्पिंग मी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी में भी और मैनेजमेंट लेवल पर भी मैं इतना अच्छे से काम अभी तक कर पाया हूँ और कर रहा हूँ. सो दैट इज़ द थिंग्स एज अ प्राउड मोमेंट. प्लस ये 20.9 CAGR का ग्रोथ लेना अगेन इज अ achievement. Absolutely, one of the achievement, I would absolutely. In terms of taking the company forward, generally family owned वालों के पास तो ऐसा रहता है, एक बैकअप प्लान है कि भाई पता है चलो बच्चा है वो आगे लेके जाएगा. In terms of now you have already developed the second line of leaders. So in terms of leaving a legacy, you said that you use the word MNC. So MNCs, they will talk about succession planning. I am sure you would have that a plan in place on how do you want to take the company forward. Can you just throw some light on that? We have core team or the people reporting to me. So since last 3 years, we are giving them a lot of different trainings. Like हिमांशु बुज के साथ पूरा 1 साल हमने सेशंस किए. निर्मल पारेख जी है, उनके साथ हमने ट्रेनिंग सेशंस किया. जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा हेड है आज, तो उनको मैंने 2 बार इंडस्ट्री 4.0 की CII की ट्रेनिंग में भेजा 4-4 दिन की. सो नाउ ही इज़ थिंकिंग कि कंपनी को आगे ले जाने के लिए कैसा एडवांसमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाना पड़ेगा. हमारे सेल्स इंजीनियर्स जो भी मैनेजर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं सेल्स में क्या आगे कैसे होना चाहिए. मार्केटिंग वाले की ट्रेनिंग हुई है. सो लाइकवाइज वी आर प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग टू टेक दैट पोजीशन. ठीक है. So you are equipping these people who are your second line of leaders. You are making them ready to fill in the gaps over, take those senior leadership positions over the period. अभी उनको सबको मैं वही समझा रहा हूँ कि अभी तक जो आप काम कर रहे हो वो आपका फंक्शन के रिलेटेड काम कर रहे हो. ठीक है. बट जब आप सीनियर लेवल पर बैठने वाले हो तो आपको खाली आपका फंक्शन नहीं देखना है. यू हैव टू सी एज अ कंपनी फुल पिक्चर. तो फर्स्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो कंपनी आनी चाहिए. Then your function will come and then yourself will come. Right. Your and team then and then interdependency of the function से लेकर के people skills से लेके सब कुछ सीखना पड़ेगा. सिर्फ function से काम नहीं चलेगा. Everybody will have to be HR manager first. You HR manager खाली HR काम करेगा तो नहीं चलेगा. जी. So they all have to understand because they are running team. तो उनका understanding तो उनको ही करना है. So that is what all those kind of training we are providing. प्लस वी आर डिस्कसिंग विद देम कि आप आपके नीचे वाले को ट्रेन करो. जब तक आप कुर्सी खाली नहीं करोगे वो नीचे वाला आगे नहीं आ पाएगा. तो आपको नीचे वाले को तैयार करना. जैसे वो नीचे वाला तैयार है आप कुर्सी खाली करोगे तो आप आगे जाओगे. सो इट्स सेम फॉर मी ऑल्सो. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि मैं कैसे आगे जाऊँ. एंड दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग समथिंग. अभी आई एम मोर लास्ट में अगर मैं देखो तो चले 2-3 साल से आई एम वर्किंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल्स.
विच वॉज नॉट माई फोटे. ठीक है, समझ में आता था, कॉमन सेंस से समझ में आता था, बट बैलेंस शीट रीड करना, P&L जो आता है उसको रीड करना, क्या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके उसके ऊपर काम करना. सो आई एम वर्किंग विद माई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारे ऑडिटर्स हैं, उनके पास से मैं थोड़ा सा लर्न कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम वर्किंग विथ अदर कोर ग्रुप मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री. So normally what do I do is I call a meeting every 3 or 4 months for 2 hours where lot of other company entrepreneurs आ रहे हैं. हम साथ में मिलके 2 घंटा डिस्कशन करते हैं. उनकी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या सॉल्यूशन दिया, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया. Have you formed a community of sorts? Uh, Or like you're doing at your own level, no, like at people my who own you level. know and There's all? no community, but 7 or 8 people है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं. Okay. तो उनसे So you get मैं together. मीटिंग करता हूँ. हम लोग मीटिंग करते हैं, 2-3 घंटे के कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं. तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है. तो वो भी कर रहा हूँ मैं. और मैंने मेरी टीम को भी वही बोला कि आप आपके लेवल के जो पीयर्स हैं आपके, उनके साथ तो उनके साथ networking ऐसा करो. कुछ करो ताकि आपको समझ में आए कि बाहर क्या चल क्या रहा चल है. रहा वरना हम वो कुएं के मेढक Silos बन में रह जाएंगे. जाएंगे वो हम कुएं लोग. के मेढक बन जाएंगे. दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा. Yes. सो यू हैव टू थिंक आउटसाइड आल्सो. एंड क्या प्लस चल रहा है. आपकी इंडस्ट्री के बाहर लोग ये टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. पीपल कैन गेट यूनिक पर्सपेक्टिव्स व्हेन दे हियर फ्रॉम देयर पीयर्स. या सो रिसेंट अभी एक हमारा डिस्कशन चल रहा था. हमारी एक मशीन है जिसमें एक पर्टिकुलर कस्टमर ने बोला कि मुझे 100% लीक प्रूफ चाहिए. अच्छा. ठीक है, वो जो रोटो शिफ्टर की मैं बात कर रहा था, तो उसका पीछे का डोर है. ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. और ऑल ऑफ अ सडन एक आइडिया आया कि जो फ्रंट लोड मशीन है, वॉशिंग मशीन, तो उसमें तो इतना प्रेशर के बाद वो डोर लॉक हो जाता है, पानी नहीं बाहर आता है, लीक नहीं हो रहा है. तो लेट अस थिंक हाउ दे हैव डन, कैन वी अप्लाई दैट हियर. तो ऐसा डिस्कशन में से कुछ ना कुछ निकला और अभी वर्क हो रहा है उसके वर्क हो ऊपर. रहा है तो आई एम उसके श्योर ऊपर यू विल work बी हो रहा एबल है, टू तो वर्क कुछ आएगा आगे. एब्सोल्युटली. सो वो सबको ट्रेन वही दे रहा है कि आप देखो आजू बाजू में, कीप योर आइज ओपन, और उसमें से कुछ भी मिला आपको जो यहाँ अप्लाई हो सकता है बिल्कुल. कंपनी में कुछ भी काम के लिए, तो वी शुड यूज इट डिस्कस करके. सो दैट इज व्हाट दे आर गेटिंग. आई Great. मीन वी आर मेकिंग देम रेडी फॉर दैट चैलेंज. Great, great. So today's final question for the Momentum Masters would be, what are the 3 words that make you a Momentum Master? एडेप्टेबल, मतलब सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू बी एडेप्टेबल. डेलीगेशन, मतलब ट्रस्ट योर टीम एंड डेलीगेट, तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड जो नई टेक्नोलॉजी या नई जो भी आ रहा है उसको समझना, फोर्स ही करना पहले से, और उसके लिए तैयार होना. These are the 3 things I think. Technology adoption, I would say. टेक्नोलॉजी एडॉप्शन या इंडस्ट्री में कुछ चेंज आ रहा है, आपकी Or ready इंडस्ट्री में for भी चेंज आ change. रहा है. Ready for change. हाँ, सो रेडी फॉर चेंज. Hmm. जैसा अभी ओला उबर आया तो किसी को मालूम नहीं था काली पीली कहाँ चली गई, अभी पता नहीं है, कोई पूछता नहीं है. Yeah, ठीक है, धीरे right. धीरे कोई पूछता नहीं है. अभी ब्लू स्मार्ट आ गया है, अभी इलेक्ट्रिक हाँ. मोबिलिटी की तरफ दुनिया जा रही है, वो अलग है. एंड देन alongside the government is also now working on bullet trains, and then Yeah. public transportation is also evolving. Great. और मतलब ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं था, बट ये पूरा रिवॉल्यूशन लेके आ गया है. जी, absolutely. तो वो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस देखते रहना पड़ेगा मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को समझना पड़ेगा. वो समझते हुए अपने आप को रेडी करना, अपनी टीम को रेडी करना, कंपनी को रेडी करना. दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई वुड से. Great. So the 3 things which you talked about are, keeping yourself ready for the future needs, Yeah. ready for change, adaptability, and the third thing which you talked about was Employee development, delegation and employee trusting in development, उसको people. trusting in people. Like you said that everybody should be a HR manager. So anybody who needs to be a leader needs to manage people, and then they should be great at managing. They should be HR managers, so to say. Great. It was great having you, Nilesh ji, on the show today. My pleasure. It was really great understanding, and I wish you all the best for your Thanks. goal which you have set for 100 CR. I'm sure you will achieve more than that. Thank and you. we'll meet up next time on the show with yet another milestone for the show. And I wish you all the best for your journey. Let's continue the momentum. Sure. Let's keep rocking. Thank you Thank so you. much. I hope you like this episode. If you like the video,
hit the like button and share it with your fellow entrepreneur friends. For more such insightful conversations with entrepreneurs and SME enablers, subscribe to this channel. Stay tuned for more content. Until then, keep the momentum going.